Good morning, students. Today we will discuss about anatomy of hard and soft palate. So let's start with it. What is hard palate? क्या होता है hard palate? Now see this figure and you can easily define what is hard palate. देखते ही समझ में आएगा. यहाँ देखो figure में labeled है. ये hard palate है. This one, the bony one, this is the hard palate, and the soft muscular one is the soft palate. Now after looking at this figure, you can define hard palate. As you can easily see that this is the nasal cavity, this is the oral cavity, and this hard palate is basically nothing but a partition in between the nasal cavity and the oral cavity. So hard palate is a partition between the nasal cavity and the oral cavity, and it is formed anteriorly. Two-third part of the hard palate, anterior two-third part of the hard palate will be formed by the palatine process of the maxilla bone. Okay, these are the palatine process of the maxilla bone, and the posterior one-third of the hard palate will be formed by the horizontal plates of palatine bone. So the palatine bone as well as the maxilla, the palatine process of the maxilla bone will form the hard palate, and this hard palate is a partition in between the nasal cavity and the oral cavity. Now talking about the margins of hard palate, so this is the anterolateral margin. Okay, जहां मैं trace कर रहा हूं cursor से, yes, this is the anterolateral margin or border. So this anterolateral, okay. So this anterolateral margin is in continuation with the gingivae and the alveolar arches, as you can see in this figure. Alveolar arches इसमें ये teeth embedded है और surrounded with it gingivae यानी gums जो हैं वो और alveolar arches वो continuation में है anterolateral margin के hard palate के, and this is the posterior margin, free margin, the posterior free margin, which basically gives attachment to the soft palate. You can see it here in this figure. This is the posterior margin of the hard palate and it gives attachment to the soft palate. Now the hard palate has two surfaces, the superior surface and the inferior surface. So the superior surface of the hard palate, you can see in this figure, it forms the floor of the nasal cavity. Okay, this is the superior surface of the hard palate forming the floor of the nasal cavity, whereas the inferior surface of the hard palate is forming the roof of the oral cavity. Okay, so the inferior surface of the hard palate forms the roof of the oral cavity, and the superior surface of the hard palate will form the floor of the nasal cavity. Now what is soft palate? To define soft palate, as I have already told you, that it is the muscular part. So the movable muscular part or the movable muscular fold which suspends from the, or which is suspended from the posterior border of the hard palate is called as soft palate. Okay, ये जो soft palate है ये posterior margin, अभी मैंने बात किया पिछले फिगर में, ये posterior margin पीछे चल के देख लेते हैं. सो ये देखो पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ द हार्ड पैलेट से जो अटैचमेंट मिल रहा है, दिस इज सॉफ्ट पैलेट. सो द मूवेबल मस्क्यूलर फोल्ड विच अटैचेस, विच इज सस्पेंडेड, देखो यहाँ सस्पेंडेड मतलब लटका हुआ है, सो विच इज सस्पेंडेड फ्रॉम द पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ द हार्ड पैलेट इज नोन एज सॉफ्ट पैलेट. एंड दिस सॉफ्ट पैलेट बेसिकली डिवाइड्स और सेपरेट्स द नेजोफेरिंग्स फ्रॉम द ओरोफेरिंग्स. ओके, जब फेरिंग्स डिफाइन करेंगे तो हम उसमें तीन पार्ट डिफाइन करेंगे, उसमें से दो पार्ट जो है वो नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स हैं. लेरिंगोफेरिंग्स एक और तीसरा पार्ट होता है. सो नेजोफेरिंग्स and oropharynx will be separated by this soft palate. Now talking about borders and surfaces of soft palate, so soft palate has two surfaces and two borders. So first of all we will define the surfaces, and यहाँ इस फिगर में surface define करना आसान होगा. So the two surfaces of soft palate will be the anterior or the oral surface. This is the anterior or the oral surface, and this is the posterior or the posterior surface, or you can say the nasal surface. Okay, so the firstly you can see in this figure the anterior or the oral surface is basically concave. Yes, देखो ये concave है जहां मैं cursor trace कर रहा हूं. So this surface, the oral surface or the anterior surface, is basically concave, and
इट हैज अ मीडियन रेफे, एक यहाँ पे मीडियन रेफे मार्क्ड होगा। डेवलपमेंट का, जब पैलेट के डेवलपमेंट का बात करते हैं तो पैलेट का डेवलपमेंट जब स्टडी करते हो तो आप देखते हो कि बेसिकली दो पैलेटाइन प्रोसेस हैं जो कि जुड़ते हैं, और वो दो फोल्ड जो है वो मीडियन नेजल फोल्ड पे आके जुड़ते हैं, और एक मीडियन, ये जो मीडियन राफे की हम बात कर रहे हैं यही ज्वाइनिंग है राइट और लेफ्ट। अगर बात करें फॉर्मेशन ऑफ पैलेट का, सो यू कैन सी दैट द पैलेटल प्रोसेस जब ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ पैलेट, जो लेफ्ट एंड राइट पैलेटल प्रोसेस जो ज्वाइन होता है, तो ये मीडियन राफे ही उस ज्वाइनिंग का प्रूफ है इन द अडल्टहुड। सो the anterior surface of the soft palate is concave in shape and has a median raphe. Now talking about the posterior surface, so you can see this posterior surface is convex in shape. Yes, it is convex in shape and it is in continuation with the floor of the nasal cavity. देखो ये floor है nasal cavity का, so this posterior surface is in continuous with the floor of the nasal cavity posteriorly. पीछे ये nasal cavity का floor था जो कि superior surface of the hard palate से form हुआ, अभी हमने define किया previous slide में, and this nasal floor of nasal cavity is continuous posteriorly on the posterior surface of the soft palate, which is convex in shape. Now, talking about borders of the hard palate, soft palate, so there are two borders of the soft palate, the superior border, this is the superior border जो मैं trace कर रहा हूँ, this is the superior border of the soft palate, sorry, and the inferior border, the superior border and the inferior border. So the this is the inferior border, ये आगे नहीं, ये वाला पीछे वाला, this is the inferior border and this is the superior border. Now talking about superior border firstly, so superior border, as you can see in this figure, it is attached to the posterior border of the posterior free border or posterior margin of the hard palate. Okay, the superior border of the soft palate is attached to the posterior border of the hard palate, and you can see it is blending on each side with the pharynx. Pharynx के साथ जाके मिल जा रहा है. Okay. Now talking about the inferior border, so the inferior border is basically free. You can see the inferior border of the soft palate is basically free. यहाँ से भी समझ में आता है कि यहाँ पे inferior border है. Okay, तो ये तो anterior border हो गया, ये inferior border है which is free. Okay, and this free anterior border basically bounds the pharyngeal isthmus. This is the pharyngeal isthmus. Okay, this is the oropharyngeal isthmus and this is the pharyngeal isthmus. So this free margin, this posterior free border bounds the pharyngeal isthmus, and from the middle of this posterior margin you can see there is a projection, there is a conical projection which hangs downwards. This is called as uvula. Okay, this is called as uvula. And this uvula, from the, this is the apex of the uvula, this is the base of the uvula. From this base of the uvula, oh, you can trace my cursor. Yes, from this base of the uvula, you can see, you can trace that there are two curved fold of the mucous membrane. Yes, this is the anterior fold, this is the posterior fold. There are two fold. You can see in this figure there are two folds from this base of the uvula. There are two curved folds of the mucous membrane, and this the anterior fold, this the anterior fold contains the palatoglossus muscle and is called as the palatoglossal arch. This is the palatoglossal arch containing the palatoglossus muscle. Okay, and the posterior fold is called as, this posterior fold is called as palatopharyngeal arch, having the palatopharyngeal muscle. So this posterior fold is called as palatopharyngeal arch and it contains the palatopharyngeal muscle. So this is the palatopharyngeal muscle, this is the palatoglossus muscle, and this arch, the anterior arch is called the palatoglossal arch and the posterior arch is called as the palatopharyngeal arch. Now you can see there is a palatine aponeurosis. अभी हम नेक्स्ट में स्ट्रक्चर में बात करेंगे, अभी तो बॉर्डर्स एंड सरफेसेस को डिफाइन कर लिया अपन ने. नाउ वी विल मूव ऑन टू द स्ट्रक्चर ऑफ सॉफ्ट पैलेट. सो द स्ट्रक्चर ऑफ सॉफ्ट पैलेट basically has this
aponeurosis of tensor veli palatini. This is one of the muscle of the soft palate, the tensor veli palatini, or you can say the palatine aponeurosis, the aponeurosis of tensor veli palatini or the palatine aponeurosis. पीछे previous चल लेते हैं figure में. This is the palatine aponeurosis of the soft palate. So this palatine aponeurosis of the soft palate is nothing but the flattened tendon. This is the flattened tendon of the tensor veli palatini muscle. This is the flattened tendon of the tensor veli palatini muscle, and it forms the fibrous basis of the soft palate. जो fibrous जो मतलब थोड़ा सा strength देगा soft palate को, जो fibrous structure form कर रहा है वो ये palatine aponeurosis form कर रहा है. Now, near the median plane of this aponeurosis, it splits and encloses another muscle of the soft palate known as musculus uvulae. This is musculus uvulae, and it is enclosed by this palatine aponeurosis at this median plane or median raphe. Now you can see here two muscles. Okay, यहाँ पे देखो दो muscles, palatopharyngeus दिख रहा है and palatoglossus. So this palatopharyngeus muscle, it basically lies on the superior surface of the palatine aponeurosis. This is the palatine aponeurosis, and it lies, this palatopharyngeus muscle, it lies on the superior surface of the palatine aponeurosis, and the palatoglossus muscle, it lies on the inferior surface of the palatine aponeurosis. So superior surface of the on the superior surface of this palatine aponeurosis, there is a muscle known as palatopharyngeus. This is also a muscle of soft palate, and the palatoglossus is at the inferior surface of the palatine aponeurosis. ये भी एक muscle है soft palate का. And लास्टली एक चीज देखो, एक यहाँ पे पैलेटाइन ग्लैंड्स लेबल्ड है. सो दीज पैलेटाइन ग्लैंड्स आर नथिंग बट द म्यूकस ग्लैंड्स which is there in the soft palate. So कुछ पैलेटाइन ग्लैंड्स, कुछ म्यूकस ग्लैंड्स रहते हैं soft palate में, as well as some taste bud were also present in the soft palate. So this is all about the structure of the soft palate. Now muscles of soft palate, as we have already discussed in the previous slide, जो muscles हैं, there are 5 muscles of soft palate. हमने एक तो पढ़ा जिससे पैलेटाइन अपोन्यूरोसिस फॉर्म हो रहा है, जिसके फाइब्रस बैंड से, दैट इज द टेंसर वेलाई पैलाटिनी मसल. द सेकंड वन इज द लेवेटर वेलाई पैलाटिनी मसल. दिस इज द टेंसर वेलाई पैलाटिनी, दिस इज द लेवेटर वेलाई पैलाटिनी मसल. देन वी हैव द पैलेटोफेरेंजियस मसल and the palatoglossus muscle, and last but not the least we have the musculus uvulae. This is the musculus uvulae. These are the 5 muscles of soft palate. Due to lack of time, I am not going in detail of the origin, insertion and action of these muscles of soft palate. It is your homework, it is your duty to study the origin, insertion and action of these muscles of soft palate, and if in case of any doubt you can ask me. Now moving on to another term, that is another structure, that is the Passavant's ridge. This passavant, what is this passavant ridge? We have studied, we know that there is a muscle of soft palate that is called as palatopharyngeus muscle. So this is the palatopharyngeus muscle, and the fibers of the palatopharyngeus muscle, the fibers, basically the upper fibers of the palatopharyngeus muscle, it basically passes circularly within the mucous membrane of the pharynx. Within the mucous membrane of the pharynx, this is pharynx, and within the mucous membrane of the pharynx, the fibers of palatopharyngeus muscle will pass through it and forms a sphincter in the superior constrictor. It forms a sphincter in the superior constrictor. देखो एक sphincter की तरह फॉर्म हो रहा है. So this sphincter in the superior constrictor constitutes a muscle known as Passavant's muscle. यहाँ पे ये जो कंस्ट्रिक्टर, ये स्फिंक्टर फॉर्म हो रहा है, ये जो स्फिंक्टर है ये मसल फॉर्म कर रहा है जिसको हम पैसवेंट्स मसल कह रहे हैं. एंड दिस पैसवेंट मसल when the contraction of this passavant muscle occurs, it raises a ridge. एक ridge सा फॉर्म रेज होता है जिसको क्या कहते हैं, that will be termed as Passavant's ridge. And
this passivant ridge, when the soft palate becomes elevated, when the soft palate becomes elevated, it comes in contact with this passivant ridge. It comes in close contact with the passivant ridge and the pharyngeal isthmus closes. So closure of the pharyngeal isthmus will be with the help of this passivant ridge. जब मूवमेंट पढ़ेंगे आप सॉफ्ट पैलेट का तो उसमें फिर से जिक्र आएगा पैसिवेंट रिज का। तो पैसिवेंट रिज क्या है ये थोड़ा सा जानना जरूरी था। पैलेटोफेरेंजियस मसल के फाइबर्स जब म्यूकस मेम्ब्रेन के फैरिंग्स के म्यूकस मेम्ब्रेन में सर्कुलरली फाइबर्स जो है वो एम्बेडेड होते हैं तो एक स्फिंक्टर सा फॉर्म करते हैं अराउंड सुपीरियर कंस्ट्रक्टर व्हिच इज कॉल्ड एज पैसिवेंट मसल एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दैट मसल forms a ridge which is called as passivant ridge. And when the soft palate elevates, हम अभी मूवमेंट का बात करेंगे तब उसमें पढ़ते हैं, यही अभी डिस्कस कर लेते हैं. So passivant ridge यहाँ फॉर्म है. So when this soft palate elevates, तो ये जो passivant ridge है वो उसके क्लोज कॉन्टैक्ट में आ जाता है एंड ये उसके साथ साथ pharyngeal isthmus, this is the pharyngeal isthmus which basically closes with due to this मूवमेंट ऑफ द सॉफ्ट पैलेट. अच्छा मूवमेंट, अगर सॉफ्ट पैलेट के मूवमेंट्स का बात करें तो सॉफ्ट पैलेट जो है वो दो गेट्स हैं. एक तो हम बार बार अभी आपने नाम सुना, दिस द पैलेट फेरेंजियल स्टमस, दिस इज द फेरेंजियल स्टमस. ये जो है ये एक गेट है, दिस इज द फेरेंजियल स्टमस एंड दिस इज द ओरोफेरेंजियल स्टमस. ओके, सो द फेरेंजियल स्टमस एंड द ओरोफेरेंजियल स्टमस ये दो गेट्स हैं, ये दो ओपनिंग्स कह लो या गेट्स कह लो जो कि गार्ड कर रहा है ये सॉफ्ट पैलेट जो कि ये कंट्रोल कर रहा है. अब क्या है ये, एज यू कैन सी इजिली दिस सॉफ्ट पैलेट कैन इजिली क्लोजेस बोथ द गेट्स. ये दोनों गेट आराम से क्लोज कर सकता है एट अ टाइम. या तो ये ओरोफेरेंजियल स्टमस को क्लोज कर सकता है या तो ये फेरेंजियल स्टमस को क्लोज कर सकता है. नाउ क्लोजर ऑफ दीज स्टमसेस, और ये दो गेट जो क्लोजर इनका होगा, इसी क्लोजर की वजह से वेरियस फंक्शंस, वेरियस मूवमेंट जो है वो होते हैं और इन मूवमेंट्स की वजह से वेरियस फंक्शंस होते हैं. जैसे कि च्यूइंग में ड्यूरिंग सॉलोइंग, ड्यूरिंग स्पीकिंग, ड्यूरिंग कफिंग एंड स्नीजिंग, ये सॉफ्ट पैलेट का मूवमेंट जो है वो ये सारे फंक्शंस को रेगुलेट करता है. तो कुछ अगर स्पेसिफिकली बात करें, जैसे च्यूइंग का बात करें, इफ अ पर्सन इज च्यूइंग, सो एट दैट टाइम द soft palate closes the oropharyngeal isthmus. It moves towards the oropharyngeal isthmus and it closes the oropharyngeal isthmus while chewing so that the food will not pass through the the nasal cavity. Food जो है वो nasal cavity में regurgitate ना हो और साथ ही साथ breathing जो है वो फैसिलिटेटेड हो रहे, ब्रीदिंग जो है वो उसमें कोई हिंड्रेंस ना हो. दैट इज व्हाई दिस सॉफ्ट पैलेट will closes the oropharyngeal isthmus while chewing. Now while chewing एक तो ये oropharyngeal isthmus को क्लोज करेगा एंड साथ ही साथ oropharynx को this soft palate will separate the oropharynx from the nasopharynx. This is the nasopharynx, this is the oropharynx. So it basically separates from the nasopharynx from the oropharynx by closure of the nasopharynx, the this is the oropharyngeal stomach and this is the pharyngeal stomach. So by the with the closure of the pharyngeal stomach, the nasopharynx is separated by the oropharynx. तो अगर ये जो पैसिवेंट रिज का बात किया था, तो पैसिवेंट रिज फॉर्म हो रहा है और पैसिवेंट रिज के क्लोज कांटेक्ट में आते ही जैसे ही सॉफ्ट पैलेट जो है वो एलिवेट होगा, जैसे ये एलिवेट होगा सो ये क्लोज कर देगा आपका फेरेंजियल स्टमस लीडिंग टू द सेपरेशन ऑफ द नेसोफेरिंग्स फ्रॉम द ओरोफेरिंग्स. नाउ ये जो क्लोजर हो रहा है फेरेंजियल स्टमस का, दिस क्लोजर अगर ये प्रॉपरली कंप्लीट हो गया तो सेपरेट हो गया, ये अपन ने बात कर ली. अगर ये कंप्लीट नहीं होता है so varying degree of closure of this pharyngeal stomach will lead to different quality of voices and or you can say modified voices. जो मिमिक्री करते हैं आर्टिस्ट, so उनका जो ये मिमिक्री जो अलग अलग तरह की आवाजें निकालते हैं, that will be with the help of the movement, the elevation of this soft palate towards the passivant ridge and the different various degree of closure of this
pharyngeal isthmus will lead to the production of uh, different types of voices, or you can say different quality of voices, as well as various consonants जो हैं उसको correctly pronounce करने के लिए various degree of closure of the pharyngeal isthmus is responsible. Now, talking about arterial and nerve supply of the palate. So पहले हम nerve supply का अगर बात कर लेते हैं, तो talking about the nerve supply of the hard palate is supplied by the greater palatine nerve as well as the nasopalatine nerve. The greater palatine nerve as well as the nasopalatine nerve, it supplies the hard palate, and these are the branches of the pterygopalatine ganglion of the maxillary nerve. So maxillary nerve का जो pterygopalatine ganglion है, वहां से nasopalatine branch and the greater palatine branch जो है, that will gives nerve supply to the hard palate. Talking about the nerve supply of the soft palate, so the motor nerve supply of the soft palate, motor nerve supply जो है वो muscles को रहेगा basically. So the muscles, the 5 muscles of the soft palate, out of that 5 muscles of the soft palate, except the tensor velli palatini, द टेंसर वेलाई पैलाटिनी, जो पैलाटाइन अपोन्यूरोसिस जिसके फाइब्रस बैंड से फॉर्म हो रहा था, उसको अगर छोड़ दें, सो ऑल द muscles of the soft palate will be supplied by the pharyngeal plexus. यहाँ फिगर में नहीं दिख रहा है. So there is a pharyngeal plexus which supplies all the muscles of the soft palate except the tensor velli palatini, and the tensor velli palatini basically is supplied by the mandibular nerve. Okay. फेरेंजियल प्लेक्सिस जो फॉर्म होता है वो फॉर्म होता है क्रेनियल पार्ट ऑफ द एसेसरी नर्व थ्रू द वेगस. तो 10th क्रेनियल नर्व जो है और एसेसरी नर्व, उन दोनों के जो क्रेनियल पार्ट है उससे फॉर्म होता है द फेरेंजियल प्लेक्सस, व्हिच बेसिकली सप्लाइज द 4 मसल्स आउट ऑफ 5 of the soft palate, and the 5th, the tensor velli palatini, will be supplied by the mandibular nerve. This is the motor nerve supply of the soft palate. Now talking about the sensory nerve supply of the soft palate, so the lesser palatine nerve, there are 3 palatine nerves, the anterior, the middle and the posterior lesser palatine nerves. So the middle and the posterior lesser palatine nerve will basically has the general sensory nerve fibers, will basically supplies the general sensory nerve fibers to the soft palate. And glossopharyngeal nerve also, जो कि यहाँ labeled नहीं है, so glossopharyngeal nerve also supplies the central sensory nerve fibers to the soft palate. Now special sensory और gustatory nerves का अगर बात करें, so special sensory nerve fibers is also supplied by this nasal palatine nerve. जो स्पेशल सेंसरी नर्व फाइबर्स हैं जो टेस्ट सेंसेशन के लिए होते हैं, वेरियस टाइप ऑफ टेस्ट के सेंसेशन के लिए जो है, तो मैंने बताया था स्ट्रक्चर में कि कुछ टेस्ट बड्स भी हैं सॉफ्ट पैलेट में. सो कैरी द सेंसेशन ऑफ टेस्ट, द नर्व फाइबर्स which is responsible for that gustatory nerve sensation is in this lesser palatine nerve, and the secretomotor nerves also is in this lesser palatine nerve. So lesser palatine nerve basically supplies the soft palate, and the greater palatine nerve and the nasopalatine nerve will supply the hard palate. Now talking about the arterial supply, so arterial supply of the hard palate will be done through the greater palatine artery. Greater palatine artery, which is a branch of maxillary artery. So this is the greater palatine artery supplying the hard palate, and it is a branch of maxillary artery. And talking about the arterial supply of the soft palate, so this greater palatine artery, which is a branch of maxillary artery, along with the ascending palatine artery or ascending palatine branch of the facial artery and palatine branch of the ascending pharyngeal artery. So this is the ascending palatine branch of the facial artery, and this is the palatine branch of the ascending pharyngeal artery. So these two, along with the greater palatine artery and lesser palatine artery, will give blood supply to the will give the arterial supply to the soft palate. Talking about venous drainage of the soft as well as hard palate, so both the soft and the hard palate will drain its venous blood into the pterygoid plexus of veins. This is the pterygoid plexus of vein, you can see here. This is the pterygoid plexus of vein, and both the soft palate as well as the hard palate will drain its blood into this pterygoid plexus of the veins. And
in case of soft palate, there is a plexus known as tonsillar plexus around the palatine tonsils. So some amount of venous blood also drains into the tonsillar plexus of the veins along with the pterygoid plexus of veins. Last but not the least, talking about lymphatics of soft and hard palate. So both the hard and soft palate, major part of the lymphatics. First of all, we'll discuss about the lymphatic drainage of the hard palate. So the lymphatic drainage of the hard palate mostly drains into the upper deep cervical lymph nodes. The upper deep cervical lymph nodes. So major portion of the hard palate, majority of the lymph of the hard palate will drain into this upper deep cervical lymph node, whereas small amount will be drained into the retropharyngeal lymph nodes. And in case of soft palate, it is the same. Major portion of the lymph will be draining into the deep cervical, upper deep cervical lymph nodes, and small amount is also draining into the retropharyngeal lymph nodes. Now, two very important clinical conditions that you must know or that you must remember, because these two conditions are very commonly observed in our day-to-day OPDs. और ये जानना इसलिए भी ज़रूरी है because without clinical anatomy there is no point of studying anatomy. There is no use of studying anatomy. Why we study anatomy is just because we have to know the clinical significance or the applied part of the anatomy. So we are thoroughly studying the structures of anatomy just to have an insight about its applied aspect also. And as a physician, the applied aspect of anatomy is very important for you all. So the most important clinical of the hard and soft palate or of the palate is the cleft palate. Cleft palate is a congenital defect, a congenital structural defect, which is basically caused by the non-fusion of the right and left palatal process. अभी मैंने जब बात किया था शुरू में मीडियन रैफे का बात किया था. So there is, when the palate is developing, there are two processes, the left and the right palatal processes, which joins, which fuses to form the the hard palate as well as the soft palate. So if there is congenitally there is non-fusion of this right and left palatal process, that will form a cleft in the palate known as, so this condition is known as cleft palate. There is a cleft in the palate which is known as cleft palate. The least severe condition or the in the child having less structurally least severe situation, the cleft will be restricted only till the soft palate. Okay, मतलब hard palate से soft palate तक ही ये cleft जो है वो रह सकता है, सिर्फ palate तक ही रहेगा. If the cleft is restricted within the palate, then this is the least severe condition. But if the lip, if the lip hair lip also become cleft, then this is the most severe condition, in which the cleft is also included, or the cleft is continuous with the hair lip. Okay, so as you can see in this figure, this child is having cleft lip along with the cleft palate, and there is no medicinal treatment for this structural defect, because it is a structural defect. So cosmetic surgery will help to reduce this cleft. So there is cosmetic surgical interventions which will help to reduce this cleft, because in case of this cleft palate, the baby having the cleft palate cannot feed properly. Suckling of the breast will not be fully or will not be done easily due to the cleft in the palate. क्योंकि बच्चा जो है child, when the child suckles a mother's breast, then it will the baby will suckle with the help of the soft as well as the hard palate and the tongue. So the movement, the continuous movement of the tongue and the soft and the hard palate will help in suckling. And if there is a cleft in the palate, then the suckling will not be 100% efficient, leading to basically improper nutrition of the child, leading
फाइनली लीडिंग इनटू माल न्यूट्रिशन। तो बच्चों में क्या है कि माल न्यूट्रिशन हो सकता है, फीडिंग प्रॉपर नहीं हो सकता है इस क्लेफ्ट की वजह से। सो सर्जिकल इंटरवेंशन के थ्रू इसको करेक्ट किया जा सकता है, एंड कॉस्मेटिक सर्जरी के थ्रू इसको करेक्ट किया जा सकता है, जिससे फीडिंग प्रॉपर हो सके बच्चे का, और साथ ही साथ बोलने का, क्योंकि अभी अपन ने पढ़ा स्पीकिंग में भी, च्यूइंग में भी बहुत सारे सारे फंक्शंस में मूवमेंट ऑफ सॉफ्ट पैलेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है ये क्लोजर बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये क्लिफ्ट रहता है देन द फोनेशन ऑल्सो डिफर्स इन अ चाइल्ड। वो बोल ढंग से नहीं पाता, कॉन्सोनेंट्स को, वोवल्स को ढंग से प्रोनाउंस नहीं कर पाता। सो टू करेक्ट दीज कंडीशंस देयर इज अ नीड ऑफ सर्जिकल कॉस्मेटिक सर्जिकल इंटरवेंशन। एंड बहुत छोटे बच्चे में वो सर्जिकल इंटरवेंशन नहीं करते हैं। जब बच्चा जो है वो थोड़ा जो है एज में अटेन कर लेता है, तो जब उसका फिजिकल ग्रोथ, जब उसके हेड का ग्रोथ, जब उसका फिजिकल ग्रोथ ठीक हो जाता है, देन द सर्जन विल गो विद द कॉस्मेटिक सर्जिकल इंटरवेंशन। The second most common condition which is observed in day-to-day practice is the paralysis of the soft palate. You can see in this figure, हमने दो आर्चेस के बारे में पढ़ा था। ओके, तो जो दो आर्चेस आपने पढ़े थे वो कौन कौन से पढ़े थे? दो आर्चेस, palatoglossal and palatopharyngeal. So the anterior one is the palatoglossal arch and this is the posterior one is the palatopharyngeal. So the palatoglossal arch देखो यहाँ पे कैसा फ्लैट सा दिख रहा है, दिख रहा है। So this flattening of the palatoglossal arch, this flattening of the anterior fold or palatoglossal arch is due to the paralysis of the soft palate. This paralysis of soft palate basically occurs, मसल्स हमने पढ़ी 5 मसल्स, तो उनका वहां पे पैरालिसिस हो सकता है मसल्स का, लीडिंग टू द फ्लैटनिंग ऑफ दीज पैलेटल आर्चेस। तो ये पैलेटल आर्चेस का फ्लैटनिंग हो सकता है। इसके साथ ही साथ क्या हो सकता है कि नेज, हमने भी पढ़ा था सो कि नेजोफेरिंग्स वो ओरोफेरिंग्स से अलग कर रहा है। सो अगर ये सॉफ्ट पैलेट जो है इसके मसल्स का पैरालिसिस होगा, देन मूवमेंट हिंडर्ड होगा, और फूड जो है वो रिगर्जिटेट कर सकता है नेजल कैविटी में। सो द नेजल रिगर्जिटेशन ऑफ लिक्विड्स, कॉमनली लिक्विड रिगर्जिटेट होता है, नेजल रिगर्जिटेशन ऑफ द लिक्विड easily occurs, as well as the flattening of the palatal arches occurs due to the paralysis of soft palate। और ये जो पैरालिसिस होगा सॉफ्ट पैलेट का, हमने नर्व सप्लाई पढ़ा था। किससे पढ़ा था नर्व सप्लाई? मसल्स का बात करें अगर, मोटर नर्व सप्लाई पढ़ा, तो किससे पढ़ा नर्व सप्लाई, मोटर नर्व सप्लाई? फेरेंजियल प्लेक्सस से पढ़ा था, और वो किससे था? वेगस के थ्रू। तो एनी लेजन इन द वेगस नर्व, any lesion in the vagus nerve will produces paralysis of the soft palate। and जो दो चीजें, दो कंप्लेन, दो सिम्टम पेशेंट बताएगा, एक तो बार बार जब भी पानी पिएगा या कोई लिक्विड इनटेक करेगा तो नेजल रिगर्जिटेशन होगा उसका, एंड when you examine the patient you can see that जो palatal arches हैं वो flat हो रहे हैं। so this is significant of the paralysis of soft palate। So that is all for today, and that is all about hard palate and soft palate. In next video lecture we will discuss about anatomy of pharynx. Till then, stay home, stay healthy, take care. Thank you so much.